गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लोकपाल के ऑर्डर को रोक दिया है जिसमें कि लोकपाल ने हाई कोर्ट के जजेस को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंडर कर लिया था। तो जनवरी 27 2025 में लोकपाल ने ऑर्डर निकाला और कहा कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं और वो लोकपाल एक्ट 2013 के अंडर आते हैं और इसलिए उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया इसका और इस डिसीजन को जो है वो रोक दिया और कहा कि ऐसे डिसीजन बहुत डिस्टर्बिंग है और ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। इवन जो सॉलिसिटर जनरल हैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी लोकपाल के इस जुरिस्डिक्शन के जो डिसीजन को जो है वो अपोज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, कहा कि जो आइडेंटिटी ऑफ द कंसर्न जज है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जजेस को जो है वो पब्लिक सर्वेंट्स ट्रीट नहीं किया जा सकता अंडर लोकपाल एक्ट। और ये हाईलाइट करता है डिफरेंस बिटवीन हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी, क्योंकि लोकपाल ने क्या कहा था कि उनके ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तो नहीं है लेकिन हाई कोर्ट के जजेस पर है। ये केस एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा फ्यूचर इंटरप्रिटेशंस ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को भी एंटी करप्शन लॉज में। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया गया था करप्शन एट हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से डील करने के लिए। ठीक है। लोकपाल बनाए गए हैं सेंट्रल लेवल के लिए, लोकायुक्त जो है वो स्टेट्स में बनाए गए हैं ताकि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके गवर्नेंस में। तो लोकपाल जो है वो एक मल्टी मेंबर एंटी करप्शन बॉडी होती है। एलिगेशंस ऑफ करप्शन को इन्वेस्टिगेट करती है अगेंस्ट हाई रैंकिंग पब्लिक ऑफिशियल्स। तो एक जो सेंट्रल लेवल पर जो है लोकपाल जो होते हैं वो हेडेड होते हैं एक चेयरपर्सन द्वारा और इसमें 8 मेंबर्स होते हैं अप टू। ठीक है। जुरिस्डिक्शन होती है इसमें कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कवर करते हैं ये कुछ एक्सेप्शंस के साथ। मिनिस्टर्स, एमपीज, ग्रुप ए और बी के ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट में भी जो है वो लोकायुक्त होते हैं और लोकपाल के पास पावर्स होती हैं इंक्वायरीज को ऑर्डर करने की भी। ठीक है। प्रोसिक्यूशन रिकमेंड करने की या फिर डायरेक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की भी। इस एक्ट के अंदर विसल ब्लोअर्स की भी जो है वो प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? एक्ट प्रोवाइड करता है कि इंडिपेंडेंट वॉचडॉग मैकेनिज्म जो कि इन्वेस्टिगेट कर सके करप्शन केसेस को सेंट्रल और स्टेट लेवल्स दोनों पर। टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, एमपीज जो है उनको एक स्क्रूटनी में डाला गया है। तो इससे जो है पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस बढ़ेगा। लोकपाल के पास अथॉरिटी है कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन रिकमेंड कर सके बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। और हर स्टेट में लोकायुक्त जो है वो भी बनाने का प्रोविज़न है ताकि स्टेट लेवल एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स भी हों। ठीक है। तो चैलेंजेस क्या हैं? बहुत सी स्टेट्स ने अभी तक तो लोकायुक्त बनाए ही नहीं है। इवन जो सीबीआई है वो भी अभी तक जो है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है लोकपाल को असिस्ट करती है, वो तो अभी तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है। बहुत से सिटीजन जो है वो अनअवेयर हैं लोकपाल के रोल पर भी और उनको ये भी नहीं पता कि कंप्लेंट्स कैसे फाइल करते हैं। ठीक है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अपॉइंटमेंट जो होती हैं लोकपाल पर वो इन्फ्लुएंस्ड होती हैं बाय रूलिंग गवर्नमेंट, तो इसलिए इम्पार्शियल भी नहीं है लोकपाल। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रीमैच्योर रिलीज ऑफ कन्विक्ट्स। टॉपिक आपके गवर्नेंस और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि स्टेट्स जो हैं प्रीमैच्योर रिलीज कर सकती हैं एलिजिबल प्रिजनर्स को अपनी अपनी रेमिशन पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो कुछ कन्विक्ट्स तो एग्जाम्प्ट हैं लेकिन स्टेट्स के पास अथॉरिटी दी गई है कि वो रेमिशन ग्रांट कर सके अंडर बीएनएसएस और सीआरपीसी। ठीक है। रेमिशन का मतलब क्या होता है कि एक कन्विक्ट के जो सेंटेंस है उसको कम कर दिया जाए। सेक्शन 473 जो है बीएनएसएस का, उसको उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाता है कि वो रेमिट कर सकें सेंटेंसेस को किसी भी टाइम पर विद और विदाउट कंडीशंस। अगर कंडीशंस वायलेट होती हैं तो रेमिशन को रिवोक भी किया जा सकता है, कन्विक्ट को रीअरेस्ट भी किया जा सकता है बिना वारंट के। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सरसाइज करती हैं रिमिशन पावर को अंडर बीएनएसएस और सीआरपीसी। तो सेक्शन 475 जो है बीएनएसएस का, वो कहता है कि जो लाइफ कन्विक्ट्स हैं जो कि गिल्टी हैं ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल बाय डेथ है, उनको कम से कम 14 साल की सज़ा जेल में काटनी है तभी वो रिलीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट इंटरप्रिटेशन ये है, इसमें पहले था कि रेमिशन जो है वो एक एप्लीकेशन जब तक कन्विक्ट ना दे तब तक जो है रेमिशन नहीं होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स जो हैं वो अपनी अपनी रेमिशन ऑटोमेटिकली भी दे सकती हैं चाहे
एप्लीकेंट ने फाइल ना भी किया हो। तो इसमें कुछ पुराने केसेस हैं, जैसे संगीत एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस, जिसमें सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी में कहा गया था कि सुओ मोटो रेमिशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन मोहिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कहा गया कोर्ट्स जो है वो ग्रांट कर सकती, कैन अपने आप जो है रिमिशन नहीं ग्रांट कर सकती। फिर लेकिन बाद में शिफ्ट की गई अप्रोच को, जिसमें कहा गया कि बहुत सी स्टेट प्रिजन मैनुअल्स जो है उसमें प्रिजन सुपरिटेंडेंट जो है उनके पास रिमिशन प्रोसीडिंग्स करने की पावर है। संगीत जजमेंट को भी जो है वो दिया गया था, जो उस समय डिस्क्रिशनरी और मास रिलीजेस को रोकने के लिए दिया गया था, खासकर फेस्टिव सीजन्स पर। लेकिन बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रेमिशन पॉलिसीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर आप फिर भी नहीं रेमिशन कर रहे हो ऑटोमेटिकली, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्ररी है। तो अगर आप इस ड्यूटी को जो है वो इग्नोर करते हो, तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स को कहा है कॉम्प्रिहेंसिव रेमिशन पॉलिसी बनाओ 2 महीने के अंदर अंदर, अगर आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है तो रेमिशन की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि क्राइम का मोटिव क्या था, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है उस पर्सन का, पब्लिक सेफ्टी पर कुछ इम्पैक्ट आएगा कि नहीं, रिहैबिलिटेशन होगी उसकी कि नहीं, या रिकमरेंस जो है क्रिमिनल टेंडेंसीज़ की उसको रोका जा सकता है कि नहीं, और रीजनेबल होनी चाहिए रिमिशन की कंडीशंस, क्लियर और इन्फोर्सेबल होनी चाहिए, और प्रोटेक्शन भी है कुछ इसके अंदर, जैसे कि कुछ अगर माइनर वायलेशंस होते हैं तो उसको अवॉइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कन्विक्ट्स जो है उनको एक नोटिस देना पड़ेगा कि उनकी जो है रेमिशन को क्यों कैंसिल किया जा रहा है, और कन्विक्ट्स को एक चांस भी दिया जाए कि वो रिस्पॉन्ड भी करें कि एक स्टेट्स जो है वो फाइनल डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। तो प्रिजन के अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें तो टोटल इनमेट्स इंडिया में 5,73,000 समथिंग है। टोटल प्रिजन कैपेसिटी 4,36,000 के आसपास है। तो मतलब ऑक्यूपेंसी रेट 131.4% है, मतलब ओवर क्राउडेड है हमारी प्रिजन्स। 75.8% जो इनमेट्स हैं वो अंडर ट्रायल्स है, मतलब अभी तक उनके ऊपर वर्डिक्ट ही नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल लॉन्च किया है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज और कोहेसिव डिजिटल आइडेंटिटी देना चाहता है सभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ और प्लेटफॉर्म्स को। तो एक यूनिफाइड और कंसिस्टेंट डिजिटल ब्रांड बनाना चाहते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये gov.in इनिशिएटिव का एक पार्ट है। सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज किया जाएगा गवर्नमेंट वेबसाइट्स को। कलर पैलेट्स, जो टाइपोग्राफी होती है, इकोनोग्राफी होती है गवर्नमेंट वेबसाइट्स की, उनको सिमिलर सा कर दिया जाएगा, ताकि जो है कंपेलिंग और ट्रस्ट वर्दी ब्रांड प्रेजेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है वेबसाइट्स की लगे, नेशनली भी और ग्लोबली भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं उनके पास, उनके ऊपर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पटिशन्स फाइल की जा रही हैं उसकी एक्यूरेसी को वो देखें, चाहे ड्राफ्ट किसी और एडवोकेट ने भी बनाया हो। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जिनको पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 145(1) के अंदर, कि वो जो है वो रूल प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो होता है कोर्ट में उससे रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं। तो एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक लीगल प्रोफेशनल होता है जो एंटाइटल्ड होता है अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और प्लीड करने के लिए उनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में। और इनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट होता है फाइल करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए केसेस को सुप्रीम कोर्ट में। कोई भी और एडवोकेट जो है अदर देन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अपेयर नहीं हो सकता, प्लीड नहीं कर सकता एनी मैटर में, अनलेस एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने उनको बोला हो। कोई सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं वही ऑथोराइज होते हैं वकालतनामा फाइल करने के लिए। जितने भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स होते हैं वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही फाइल करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, चाहे ड्राफ्टिंग हो, फाइलिंग ऑफ पटिशन्स हो, एप्लीकेशंस हो, या बाकी के लीगल डॉक्यूमेंट्स। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है पर्सनली लाइबल भी होते हैं पूरी पेमेंट ऑफ फीस और चार्जेस जो कोर्ट को देनी है उसको देखने के लिए। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उनकी क्या जो है वो क्राइटेरिया है, ठीक है। वो एनरोल होने चाहिए किसी भी स्टेट बार काउंसिल के साथ, मतलब कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कम से कम एक सीनियर, 1 साल की ट्रेनिंग कम से कम एक सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर। और वो जो सुप्रीम कोर्ट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी अपेयर होने चाहिए, ठीक है। एडवोकेट के पास एक ऑफिस होना चाहिए विद इन 10 माइल्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट हाउस, और एक अंडरटेकिंग भी उन्हें देनी पड़ती है कि वो एक क्लर्क को जो है वो एम्प्लॉय करेंगे जो कि एक रजिस्टर्ड क्लर्क होगा, और उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया को इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंसी में
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन में, सिंगापुर में। तो इसको 1957 में एज ए एनजीओ पहले बनाया गया था, लेकिन बाद में ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई 2024 में। ये ग्लोबल मैरीटाइम नेविगेशन सिस्टम्स को हार्मोनाइज करने के लिए इसका मैंडेट है। 200 इसके मेंबर्स हैं और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, दिनेश खारा कमेटी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई है। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एसबीआई दिनेश खारा के जो है वो चेयरपर्सनशिप में, जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर जो कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। तो एक 7 मेंबर कमेटी होगी जो आईआरडीए ने बनाई है। ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जो हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938 में उसको रिव्यू करेगी और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बनाएगी कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया जाए, जिसके अंदर प्रोविज़न ये है कि एफडीआई जो कैप है इंश्योरेंस सेक्टर में उसको 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया जाए। और कमेटी का मैंडेट सिर्फ उतना ही रहेगा कि जो चेंजेस प्रपोज करे और डिटरमिन करे इम्प्लीमेंटेशन को, कोई एडिशनल ये अमेंडमेंट्स ये अब सजेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्ट जो है वो प्राइमरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कंट्री की इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। स्कोप ऑफ लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस को कंट्री में ये डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पार्किंसंस डिसीज़। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ब्रेक थ्रू स्टडी हुई है जिसमें हमने एक हिडन प्लेयर जो है वो अनकवर किया है पार्किंसंस डिसीज़ में, 24-OHC, जो कि एक कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइट है जो फ्यूल करता है स्प्रेड ऑफ हार्मफुल प्रोटीन क्लम्प्स इन द ब्रेन को। ठीक है, तो पार्किंसंस डिसीज़ है क्या? एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है जो प्राइमरीली मूवमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें नर्व सेल्स जो है वो वीक होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं, मरने लगते हैं और उससे सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे कि मूवमेंट में प्रॉब्लम होना, ट्रेमर, स्टिफनेस, इम्पेयर्ड बैलेंस। जैसे जैसे सिम्टम्स प्रोग्रेस होते हैं, जो पीपल होते हैं पार्किंसंस डिसीज़ के, उनको डिफ़िकल्टी होती है वॉक करने में, टॉक करने में, कंप्लीट करने में बाकी के सिंपल टास्क। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो लॉस ऑफ न्यूरॉन्स से होता है। न्यूरॉन्स जो हैं वो एक बॉडी का एक ब्रेन का एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया निग्रा, वहाँ पर ये जो है डोपामिन बनाते हैं। डोपामिन जो केमिकल मैसेंजर होता है जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र करता है ब्रेन में कि वो है मूवमेंट करनी है बॉडी को। मोस्ट पीपल जिनको पार्किंसंस डिजीज़ होती है उनकी 60 to 80% जो है डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है वो मरने लगते हैं, जो इस लैक ऑफ डोपामिन की वजह से मूवमेंट स्लो होने लगती है और ट्रेमर सिम्टम्स आते हैं। तो मोस्टली ये देखा गया है कि एवरेज एज जो है जब ये स्टार्ट होती है पार्किंसंस डिसीज़ तो वो 60 ईयर्स है और मोर कॉमन है ये मेल्स में। कोई ब्लड या लेबोरेटरी या रेडियोलॉजिकल टेस्ट इसको जो है वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, कोई इसका क्योर भी नहीं होता है। लेकिन कुछ तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जिससे लाइफस्टाइल जो है वो या फिर जो है इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Lokpal and Lokayukts Act 2013. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has stayed a Lokpal order bringing High Court judges under its jurisdiction, and it has termed this anti-corruption ombudsman very disturbing. Okay, so in January 2025, the Lokpal declared that High Court judges are public servants and they fall under the Lokpal Act, and therefore they can be investigated. Supreme Court but took suo motu cognizance and halted this decision and said that it is very disturbing because this decision could have affected the independence of judiciary. The Solicitor General Tushar Mehta represented the government and opposed the Lokpal's jurisdiction over judges. Supreme Court ordered that the identity of the concerned judge should be kept confidential. What will be the implications of this Supreme Court stay? So judges cannot be treated as public servant under the Lokpal Act. It also highlights the difference between High Court and Supreme Court judges because Lokpal had earlier ruled that it does not have jurisdiction over Supreme Court judges, but it was trying to have jurisdiction over the High Court judges. This case could set a precedent for future interpretations of judicial accountability also under anti-corruption laws. Okay, so the Lokpal and Lokayukt Act 2013 was introduced to combat corruption at the highest levels of government in India, and it provides for the establishment of Lokpal at the central level and Lokayukts in the states. It also aims to bring greater transparency and accountability in governance by establishing an independent anti-corruption body with investigative powers.
So, what is the Lokpal and Lokayukts Act of 2013? So, it establishes a multi-member anti-corruption body with the authority to investigate allegations of corruption against high-ranking public officials. So, the Lokpal was made at the central level, and it is headed by a chairperson and up to 8 members, including judicial and non-judicial members. The jurisdiction of Lokpal covers the Prime Minister also, of course, with certain exceptions. Then also the ministers, MPs, and Group A and B officers of the central government. Every state is also required to establish a Lokayukt to investigate corruption allegations against state officials. Lokpal also has power to order inquiries, recommend prosecution, and even direct disciplinary action. The whistleblower protection is also provided under this act. This act also provides an independent watchdog mechanism to investigate corruption cases at both central and state levels. By bringing top government officials, including the Prime Minister and MPs, under the scrutiny, the act reinforces public trust in governance. Lokpal also has the authority to conduct independent inquiries and recommend prosecution without needing prior government approval. Uh, the requirement to set up lokayukts in every state also strengthens the state level anti-corruption mechanisms, but there are certain challenges as well. For example, many states have not yet appointed lokayukts. CBI, which assists in investigations, still functions under the government control, affecting its independence. Many citizens are unaware of Lokpal's role and how to file complaints, reducing its effectiveness. Critics also argue that appointments to Lokpal are influenced by the ruling government, impacting its impartiality. Okay, so the next topic is premature release of convicts. This topic is important for your polity and social issues, uh, governance and social issues. So Supreme Court has ruled that states must must consider the premature release of eligible prisoners under their remission policies. While certain convicts are exempt, states have the authority to grant remission under the BNSS and CRPC. So, what is the law on remission? Remission basically means you are reducing the sentence of a convict. Section 473 of BNSS empowers the state governments to remit sentence at any time with or without any conditions. In case of conditions, if the conditions are violated, then the remission can be revoked and the convict can be rearrested without a warrant. So state government have the power under BNSS and CRPC. Under section 475 of BNSS, those who are life convicts and those who are guilty of offences punishable by death, they must have served at least 14 years in prison before being eligible for release. So earlier, the remission required an application by the convict, but Supreme Court has now ruled that states must consider their remission automatically. Okay. So there are certain past judgments on remission, like the Sangeet and ANR versus State of Haryana case of 2013, in which it was held that remission under Section 432 of CRPC cannot be granted suo motu, and it requires a convict's application. In Mohinder Singh versus State of Punjab case, the court reaffirmed that courts cannot grant remission on their own. So the court also observed that many state prison manuals require the prison superintendent to initiate remission proceedings. So the court why has the court changed its stance? So it said that Sangeet judgment was aimed to prevent discretionary and mass release of convicts on festive occasions. But when states already have their clear remission policies with eligibility criteria, why they are failing to consider remission automatically? And if they're not doing it, it would be discriminatory and arbitrary, and it would also be ignoring their duty, and it would violate Article 14. Okay, so Supreme Court has directed that all states should form a comprehensive remission policy within 2 months if they do not have one. So they can have conditions like consider the crime motive, criminal background, and public safety of the convict before releasing the convict. The aim should be rehabilitation and prevent recurrence of criminal tendencies. Be reasonable, do not impose very harsh or impractical conditions. Be clear and while imposing the conditions, they should be enforceable. Okay, but it has also said that minor violations should be avoided. Convicts must receive a notice with reasons for cancellation, and if the
state is making a decision, convicts must be given a chance to respond before the state makes a final decision. Okay, so let's look at some of the statistics with respect to prisons or prisoners. So total inmates are about 5,73,000 in India. Total prison capacity is about 4,36,000. So which means that occupancy rate is 131.4%. 75.8% of such inmates are under trials who await final verdicts. Okay. So the next topic is digital brand identity manual. This topic is important for your governance section. So Ministry of Electronics and Information Technology has launched the digital brand identity manual, and this manual is aimed to standardize and it aims to establish a standardized and cohesive digital identity across all government ministries and platforms. The aim is to create a unified and consistent digital brand of the government of India. So it is part of the gov.in initiative. The aim is to simplify and standardize government websites and standardize these elements like color palettes, typography, and iconography of the website, so as to enable government departments to present a compelling and trustworthy brand presence both nationally and globally. So the next topic is advocate on record. This topic is important for your polity section. So Supreme Court has recently held that advocates on record bear full responsibility for the accuracy of petitions filed before the court, even if the drafts are prepared by other advocates. So advocate on record concept was introduced by the Supreme Court with the power given to it under Article 141 Clause 1 of the Indian Constitution. So AOR is a legal professional who is entitled to represent clients and plead for them in the Supreme Court. So an AOR has the exclusive right to file and conduct cases in the court, Supreme Court, and no advocate other than AOR can appear or plead in matters unless an AOR has instructed him. Okay. Only an AOR is authorized to file a vakalatnama. All the procedural aspects need to be completed by AOR only, which includes drafting and filing petitions, applications, and other legal documents. AOR is personally liable for the due payment of all fees or charges payable to the court. So, what is the eligibility or requirements for becoming an AOR? Any advocate is required to be enrolled with any state bar council. He or she should have a prior experience of at least 4 years. He or she should have gone a training of 1 year under a senior AOR, and advocate has appeared for the examination conducted by the Supreme Court. This advocate is also required to have an office in Delhi with a radius of 10 miles from the Supreme Court House, and he or she should have given an undertaking to employ a clerk who shall be a registered clerk. Once registered, this AOR is given a unique identification number which must be used on all documents filed in the Supreme Court. Okay. So the next topic is International Organization of Aids to Marine Navigation. This topic is important for your international relations and economy section. So recently, India has been elected to the vice presidency of International Organization of Aids to Marine Navigation in Singapore, and it was established in 1957 as an NGO, but later on in 2024 it was converted into an intergovernmental organization. Of course, the mandate is to harmonize the global maritime navigation systems, promote maritime safety initiatives, and collaborate with other member states, international organizations, and industry stakeholders. It comprises of 200 members, and France is the headquarter. Saint-Germain-en-Laye is the headquarters of this organization. Okay. So the next topic is Dinesh Khara Committee. This topic is important for our economy section. So IRDA has recently set up a 7-member committee headed by a former chairperson of SBI, Dinesh Khara, to examine the proposed amendments to the Insurance Act of 1938. So the purpose of this committee will be to review the proposed amendments to the Insurance Act and recommend a regulatory framework for their implementation. So Union government is preparing to introduce the Insurance Amendment Bill to the Parliament, and the proposed amendments include increasing the FDI cap in the insurance sector from 74% to currently to 100% now. So the committee's mandate is strictly limited to reviewing the proposed changes, and it would not be suggesting any new amendments. Okay. What is the Insurance Act? It is the primary regulatory framework for the country's insurance industry, and it defines the scope of life, general, and health insurance in the country. So the next topic is Parkinson's disease. This topic is important for your social issues. So a breakthrough has been uncovered, has a breakthrough study has uncovered an hidden player in Parkinson's disease
called the 24-OHC, which is a cholesterol metabolite which fuels the spread of harmful protein clumps in the brain. Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disorder which primarily affects movement. It causes the nerve cells called the neurons in parts of the brain to weaken, become damaged, and die, which leads to symptoms like problems with movement, tremor, stiffness, and impaired balance. As symptoms progress, people with Parkinson's disease may have difficulty walking, talking, or completing other simple tasks. So, the most common types of symptoms result from the loss of neurons in an area or near the base of the brain called the substantia nigra. So, neurons in this area produce dopamine. Dopamine is the chemical messenger which transmits signals in the brain to produce smooth, purposeful movement. Most people with this disease or Parkinson's disease, they have lost about 60 to 80% or more of the dopamine producing cells. So this lack of dopamine causes the slowed movements on tremor symptoms. Okay, so the average age of patients who have Parkinson's disease is about 60 years. They are more. This disease is more common in males. No kind of blood laboratory or the radiological test is available to diagnose this disease. There is no cure for this disease also, but of course treatment can help significantly improve the symptoms. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.